Hello friends, this is Vikrant and welcome to Vibrant Classroom. तो आमे जमिति आगु को SSB-TGT एग्जाम होबार अछि बा LTR एग्जाम मध्ये आगु को आसीबार अछि बा इनिशियल अपॉइंटी एग्जाम जो जाईछि तो सेइथरे जो पेडागोजिकल पार्ट अछि जो थिरु आमे जो क्वेश्चन आसे तो सेई क्वेश्चन रिलेटेड आमे किछि कांसेप्ट को एठी डिस्कशन करिवु. तो टुडे वी विल डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच by कार्ल्स रोजर एंड ए थ्योरी रे ए कांसेप्ट रे हमें कौन डिस्कशन करिवु ना कांसेप्ट रिलेटेड बाय अबाउट ऑर्गेनिज्म देन फिनोमिनल फील्ड टाइप्स ऑफ सेल्फ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आउ एटी पर्सनालिटी कांसेप्ट डेवलपमेंट बाबद रे मध्य कार्ल्स रोजर जो कांसेप्ट अछि ताको मध्य किछि डिस्कशन करिवु. तो केवल जे डिस्कशन होबो कांसेप्ट रिलेटेड डिस्कशन होबो ता नुहे. एट लास्ट एट द एंड ऑफ द सेशन वी आल्सो डिस्कस some sorts of MCQs and which is very close related to our examination pattern. Okay, so let's start today's class, humanistic approach of Carl Roger. तो जमिति आमे साइकोलॉजी रे विभिन्न स्टेज रे विभिन्न प्रकार रो डेवलपमेंटल थ्योरी आमे जानि छथि जमिति कि बिहेवियरिज्म थ्योरी देन साइकोएनालिसिस थ्योरी देन कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी. In same manner another theory, another concept is there that is called humanistic theory or humanistic approach in psychology. तो से अप्रोच बाबद रे जानिबा को आमे जते बेला आगु को जिबा ता आगु आमे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बाबद रे टिके डिस्कशन करिबा. जेमिति वर्ड रो आमे बुझि परतबा ह्यूमनिस्टिक कथा कहूची तो दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स. ओके, जते बेला ह्यूमन बीइंग्स बाबद रे कथा डिस्कशन करा जाउची सी कांसेप्ट बा सेही रिलेटेड कथा को आमे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बाबद रे ताको आमे नै परिबा. तो दैट इज ए साइकोलॉजी जोटा कि फर्स्ट टाइम इवॉल्व हेइथिला बाय द अब्राहम मास्लो. जो अब्राहम मास्लो साइकोलॉजिस्ट अछंती से ही ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को फर्स्ट नै के आस्थिले तांकर जो कांसेप्ट को से फर्स्ट डिफाइन करथिले. तापरे विभिन्न साइकोलॉजिस्ट माने तांकर कांसेप्ट को आगु को नेले. तो सेही जो साइकोलॉजिस्ट भितरे कार्ल्स रोजर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हु प्रोवाइड ए ग्रेट focus on the development of such psychological approach. Okay, so humanism psychology with different school of thought in 1960 to 1980 भितरे ଗୋଟେ ନୂଆ thought process psychological approach रे आगु को आसिला with the intention to the change psychology's methods and subject matter. So humanistic psychologists objected the thought concept of psychoanalysis and behaviorism. जो साइकोएनालिसिस प्रोसेस रो बा बिहेवियरिज्म प्रोसेस रो जो कांसेप्ट थिला ताको अपोज करिकि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट माने तांको थ्योरी बा तांको कांसेप्ट को नै गेसी बिकॉज ऑफ प्रेजेंटिंग टू लिमिटेड एंड डिमीनिंग ऑफ द इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर. तो साइकोएनालिसिस थ्योरी हो बा बिहेवियरिज्म थ्योरी हो देयर आर सम सॉर्ट्स ऑफ प्री डिफाइंड कांसेप्ट्स आर देयर जो बेस रे की डेवलपमेंट होउची बोली डिफाइन करा होतला. किछि धरा जो आमे नै परिबा बिहेवियरिज्म रे तो गुटे कांसेप्ट बा गुटे कंडीशन प्रोसेस रे ही डेवलपमेंट हुए. साइकोएनालिसिस प्रोसेस रे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड रे ही रही कि जनकर डेवलपमेंट होची. ए जो प्री डिफाइंड बा प्री डिटरमाइंड कांसेप्ट थिला ताकू जो अपोज करी कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट माने ताको थ्योरी को प्रोपोनेंट बा प्रोपागेट कले. ओके, द साइकोएनालिटिक वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज जो साइकोएनालिसिस थ्योरी अछि ताको क्रिटिसाइज करा गला बिकॉज स्टडीइंग ओनली एजुकेशनल टर्मल्स ऑफ ह्यूमन नेचर. Rogers rejected the deterministic nature of the both psychoanalysis. जो psychoanalysis process रे जो deterministic nature थिला जे एई कांसेप्टटा एई जगह रहिबो कॉन्शियस माइंड रहिबो सबकॉन्शियस माइंड रहिबो. तो फ्रॉइड सेही बाबद रे ही डिस्कशन कले. ओके, ईड ईगो सुपर ईगो दीज आर द प्री डिटरमाइंड कांसेप्ट जोटा कि माने आमे आगरु डिफाइन कर दियंती जे गोटे ह्यूमन बी पाखरे एई सब जिंस अछि आ आगु को भी रहिबो. सो एई कांसेप्ट को सी अपोज कले तो तांको थ्योरी रे सी आउट के कोन एक्स्ट्रा नै के आसले ताको हमें आगु को देखिबा. देन फर्दर दे क्रिटिसाइज बिहेवियरिस्ट व्यू ऑफ कंडीशनड. जो बिहेवियरिस्ट पर्पस रे जो हमें कहउतलु जे लर्निंग हुए कहा थ्रो रे ना कंडीशनिंग थ्रो रे डिफरेंट कंडीशनिंग से क्लासिकल कंडीशनिंग हो ऑपरेंट कंडीशनिंग हो रेनफोर्समेंट हो. तो ए जो कंडीशनिंग प्रोसेस रे जो डेवलपमेंट होउची बा लर्निंग प्रोसेस को इनिशिएट हमें करूचंती से कांसेप्ट को से अपोज कले. And responses to stimuli which considers human beings more than the mechanized robot. आमे conditioning process रे animals मानकु training दे परिबा but we are the human beings, we have our own thought process. So
we do not learn by the process of mechanized manner. Okay, तो सेई कथा को से कहउचंती जे human beings more than the mechanized robot who react to the events in pre-order way. Pre-order way रे से react करि पारे. Okay, तो that is the basic concept of human beings or humanistic psychology. तो बेसिकली आमे जदि ताकू देखिबा जो साइकोलॉजिकल अप्रोच ह्यूमन बीइंग रो नेचर प्रेजेंट रे फोकस करी कि तार डेवलपमेंट पे इनिशिएट कराए बा काम कराए, दैट अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी इज नोन एज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ओके, then there are some sorts of assumptions about the human nature. The first one is this theory believes that human beings are rational and emphasized the role of the individuals. Yes, that is true. We human beings believe on rationally. Okay, we think rationally, we believe on different rational things. कारण आमे उडे जुक्ति जुक्त न होले कथाटा को आमे बिलीव करि पारंती, and emphasize the role of the individual also. This theory focus on the present. This theory emphasizes change, growth and the human potential. जेमिति मु कहितली जे ह्यूमन बीइंग्स को फोकस करी कि तार एटीट्यूड, तार नेचर, तार बिहेवियर को ही स्टडी करिवा प्रोसेस को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोली आमे कहि परिबा. The people are innately good and mental and social problems are consequence of their deviations from the natural tendency. जो सोशल और मेंटल प्रॉब्लम आसीबो सेटा केते बेले आसे जते बेले गोटे ह्यूमन बीइंग डेविएट हे जाय फ्रॉम देयर नेचुरल टेंडेंसी, जोटा ता पाखरे ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. एवरी इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, ओन phenomena, and when we deviate from our own characteristics, at that time we face different problems like mental and social problems. तो obviously जते बेले गोटे डेवलपमेंट कथा कुआ होची, जते बेले हमें गोटे ह्यूमन बीइंग कथा कहबा तो ह्यूमन बीइंग ऊपर ही हमें फोकस करबा कथा. The theory believes that people can control and determine their state of mental health, that is upon the human beings. Consciousness is the experienced from the first person point of view. ओके, जोटा कॉन्शियसनेस कहउचंती सेटा फर्स्ट पर्सन, जे पर्सन ताहारी पॉइंट ऑफ व्यू रे ही आमे डिटरमाइन करि परिबा बा एक्सपीरियंस नै परिबा. बिहेवियर इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ. आमे केमिति बिहेवियर शो करेबा दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, सो सेही पई कहउची दैट इज द सेल्फ बिलीफ. नेसेसरी साइकोलॉजिकल चेंजेस इज डिपेंड अपॉन द सेफ इमोशनल एनवायरनमेंट. सेफ इमोशनल एनवायरनमेंट रे ही गोटे प्रॉपर साइकोलॉजिकल नरिशमेंट हे परियो बोली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहिला. ओके, देन आमे थियोरेटिकल कांसेप्ट कोन अछि कार्ल रजरकर से बाबद रे डिस्कशन करबा. कोर ऑफ रजर्स थ्योरी, द ऑर्गेनिज्म, फिनोमिनल फील्ड, टाइप्स ऑफ सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ए चारिटा कथा बाबद रे वर्तमान आमे डिस्कशन करबा. तो ऑर्गेनिज्म गोटे ह्यूमन बीइंग को आमे गोटे ऑर्गेनिज्म भलिया आमे कहि परिया जे दैट इज एन ऑर्गेनिज्म. सो and also all the organism have their own value and conditions of worth. समस्तଙ୍କର self worth अछि and all have their own values. Rogers has defined an individual refers to organism, जोटा individual कथा कुआ होछि, who is the sum of subjective perceptions that an organism experiences. मु एज ए इंडिविजुअल कोन परसीव करूछि सीटा मो ऊपर डिपेंड करे, दैट इज माय इंडिविजुअलिटी. सेही कॉन्सेप्ट को डिटरमाइन कले बा डिफाइन कले के ना कार्ल रजर. इट इंक्लूड्स बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मटेरियल्स. इट assume that the developing organism will perceive all experience and separate them, label them as self. Okay, तो आमे जो कॉन्सेप्ट परसीव करूचंती जो से कहूची, इट इज द assume that a developing organism will perceive all experiences, जो experiences को हमें गेन कले, that should be separated in different forms. कोटा को रिलेटेड अछि, को कथाटा कहा अंडर रे आसी, ताको हमें आमो वे रे कोन करंती ना ताको कैटेगराइज कर दियंती. And human has a tendency to value positively those experiences perceived as maintaining or enhancing our lives. कोन करिया पय हमें जो हमरो ह्यूमन बीइंग्स रो टेंडेंसी गुटे थाए, we always try to maintain our life in a positive manner, okay, or enhance our life in a positive manner, and value negatively those experiences that would negative our growth. जोटा negative concept बा negative approach जोटा अछि हम growth रे,
ताकू आमे सब नेग्लेक्ट करती नेगेटिवली ताकू नियंती एज ए ह्यूमन बीइंग आमे जतबेले आमे गोटे जो वेल ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बीइंग हे जिबा बा जतबेले हमर थिंकिंग एबिलिटी डेवलपमेंट होबो देन वी कैन फाइंड आउट द व्हिच थिंग्स आर राइट फॉर मी एंड व्हिच थिंग्स आर रॉन्ग देन ऑटोमेटिकली वी कैन चेंज आवर ओन बिहेवियरल पैटर्न तो से कॉन्सेप्ट ऊपर से फोकस कले जे गोटे ऑर्गेनिज्म को आमे फ्रीडम दबा से ऑर्गेनिज्म निज वे रे निजे चूज करू ता पई कोटा ठीक कोटा भूल ओके एंड एज ए टीचर एटी आमे गोटे कथा रखि परिबा जे एज ए टीचर वी ओनली गाइड दीज इंडिविजुअल्स दोज हु कम अंडर इन आवर स्कूल लेवल आम स्कूल लेवल ले जो माने आसीबे आमे तंकु केवल गाइड टे करि परिबा एंड वी आर बोर्न विथ एक्चुअलाइजिंग फोर्सेस आम समस्त पाखे गोटे एक्चुअलाइजिंग फोर्सेस अच्छी दैट मोटिवेट अस एंड विथ वैल्यूइंग प्रोसेस दैट रेगुलेट अस तो आमे जतबेले भी किसी भूल काम करिया पे जाउचंती बा ठीक काम करिया पे जाउचंती आम भितरु गोटे किए गोटे अच्छी जोटा को आमे एक्चुअलाइजिंग फोर्स बोली कहि परिबा ता ना देई परिबा जे कि हमको रेगुलेट करे जे दैट थिंग इज गुड दैट थिंग इज बैड तो ए जो सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस टा को किए एक्टिवेट करि परिबो गोटे ऑर्गेनिज्म बा गोटे इंडिविजुअल ही एक्टिवेट करि परिबो आ जतबेले सेई गोटे इंडिविजुअल सेई कथाटा को एक्टिवेट कर दिए देन ता लाइफ टा इजियर हो जाए ता लाइफ प्रोसेस टा वेरी सिंपल मैनर रे चली पारे and that's what's more we can trust that these basic organismic process will serve us well than significant and other gives positive regards based on the conditions rather than unconditional the self concept then become based on these standards of values rather than on an organism's evaluation therefore the organismic valuing process gets affected then okay तो जदि आमे सेल्फ कॉन्सेप्ट जदि आमे डेवलप न करि परचोंदी सी कथाटा से कहूची द सेल्फ कॉन्सेप्ट देन बिकम्स बेस्ड ऑन दीज स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूज रेदर देन द ऑर्गेनिज्मिक इवैल्यूएशन एंड देयरफॉर द ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस गेट्स अफेक्टेड देम तो जदि आमे प्रॉपर वैल्यू को अंडरस्टैंड करूचोंदी बुझुचोंदी ताको रियलाइज करूचोंदी ताको बिहेवियरल पैटर्न ले यूज करूचोंदी then automatically we become a good human being psychologically and also socially. Then the next concept is phenomenal field. So what is concept of what is the meaning of phenomenal field? Phenomenal field is generally a perception based on reality. Perception based on reality. The things which we perceive from our surrounding or from our cognitions आमे आम cognitive process रे जो जिंस को perception करचोंती बा कोठू environmental process रु मध्ये जो कथा आमे perceive कले से concept को जते बेले आमे स्टोर करके रखुचोंती जो फील्ड रे स्टोर करके रखुचोंती mental condition रे जो mental condition but that is considered as a field बा रजर ताकू कार्ल्स रजर ताकू कोन कहले that is a field जो फील्ड रे आमे हमरो self cognition हो बा आमे environmental रु किछि perceive करि पारि थांती ताकू आमे जो फील्ड रे स्टोर करके रखुचोंती दैट फील्ड इज नोन एज फिनोमिनल फील्ड एंड इट इंक्लूड्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपीरियंसेस एक्सटर्नल जोटा को आमे कहि परिबा एनवायरनमेंट तो इंटरनल को आमे कहि परिबा जे कॉग्निशन जोटा आमे आम मेंटल प्रोसेस रे तयारी करचोंती आम निज भितरे सेटो को आमे कॉग्निशन हिसाब रे नै परिबा आवर वर्ल्ड इज आवर एक्सपीरियंस्ड एंड फिनोमिनल वर्ल्ड जो कथाटा को आमे हम लाइफ टाइम भितरे जो कथा गुडा को आमे एक्सपीरियंस्ड करूचोंती जो कथा गुडा को आमे स्टोर करके रखुचोंती सेही कांसेप्ट को हम फिनोमिनल वर्ल्ड बोली आमे कहि पारे दैट एक्सपीरियंस इज नोन एज फिनोमिनल वर्ल्ड हियर द मेजर फोकस इज व्हाट ए पर्सन अंडरस्टैंड टू बी ट्रू रेदर देन व्हाट एक्चुअली इज ट्रू ओके तो ए जो फिनोमिनल वर्ल्ड रे हमकु बा फिनोमिनल फील्ड भितरे आमे रियलाइज करि परंती कोटा ठीक आ कोटा आमो पई ठीक अंडरस्टैंड जो कहूची पर्सन अंडरस्टैंड टू बी ट्रू परसीव्ड रियलिटी रेदर देन व्हाट एक्चुअली ट्रू मु जोटा परसीव करूची मु जोटा बुझुची सेटा मो पई ठीक अछि ओके देयरफॉर द परसेप्शंस ऑफ टेस्ट साउंड इंडिकेट्स हाउ वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड आर एज इंडिविजुअल एज आवरसेल्व्स तो डिफरेंट इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू रे वर्ल्ड रो कांसेप्ट बा वर्ल्ड रो पॉइंट ऑफ व्यू टे डिफरेंट रहइबो तो सेही एस्पेक्ट रे ई कथा को से डिफाइन करचंती जे every individuals have their own phenomenal field and in this field they have a lot of experiences from their life externally he pare internally he pare if other wish to understand our particular actions we must try to place themselves as much as possible into our internal frame of
रेफरेंस एंड सब्जेक्टिव वर्ल्ड जदि किए चाहूँगी धर जो एज ए टीचर यू ट्राई टू रियलाइज अबाउट योर स्टूडेंट्स एट दैट टाइम you can place yourself in the internal frame of reference of that particular individual जितेबाला आम तार इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भितर निजक प्लेस करवा तापर आम रियलाइज करिपरिबा जे से इंडिविजुअल रो कौन चेंजेस होउची बा सी बिहेवियरल पैटर्न केमिति शो करिया पय चाहूची बा केमिति शो करूची ताकू रियलाइज करिया पय आम तार इंटरनल फ्रेम भितर बा तार सब्जेक्टिव वर्ल्ड भितर हमकू प्लेस होबा पय पड़िबो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ फिनोमिनल फील्ड. Then according to Roger, the self has three aspects. Roger को हिसाब रे जो self कथाटा को होची गुटे individual have their own self. तो से जो self ता तीनटा पार्ट रे से डिवाइड करछन. The first one is real self, second one is perceived self, and the third one is ideal self. Concept बा word रू भी हमें किछि किछि मात्रा रे बुझी पड़तुआ. जो real self बा self worth बोली हमें ता कोइ परिबा. Also known as the self esteem. जोटा आम पाखे अच्छी समस्त पाखे जो सेल्फ एस्टीम अच्छी निजत्व बोली आम कहीपर ठीक अच्छे एंड व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ्स दैट इज कॉल्ड योर रियल सेल्फ मु मो बाबद कौन भावुची मु मो बाबद कौन भाविकी मु केमिति मो निजको रिप्रेजेंट करी दैट इज डिपेंड ऑन मी मते गोटे कौटी जीवार अच्छी तो मु भल से रेडी होगी गले मोर एक्सप्रेशन भल रही मु वेल ड्रेसिंग सेंस रे गले मोर एक्सपीरियंस माने जो मोर एपियरेंस टा भल रही ये सब कथा को मते ही डिटरमाइन करिया पे पड़िबो मु केमिति बिहेवियर शो कले मते लोक एप्रिशिएट करिवे दैट इज डिपेंड ऑन मी से जो कथाटा को आमे सेल्फ एस्टीम बोली कहि परिबा एंड रॉजर बिलीव दैट डेवलप इन द अर्ली चाइल्डहुड एंड इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरैक्शंस विथ आवर पेरेंट्स तो ये जो सेल्फ रियल सेल्फ बा सेल्फ वर्थ वेरी अर्ली पीरियड ऑफ आवर लाइफ गॉट स्टार्टेड जोटा कि आम कहि परिबा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रु ए सेल्फ वर्थ रो कांसेप्ट स्टार्ट हो जाए रियल सेल्फ रो कांसेप्ट स्टार्ट हो जाए आम बुझी पारंती आउ दैट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बाय द इंटरैक्शंस विथ आवर पेरेंट्स व्हेन वी कंपेयर्ड आवरसेल्व्स टू अदर्स एंड फाइंड दैट वी आर बेटर एट समथिंग एंड अदर्स ओके एंड और दैट पीपल रेस्पोंड फेवरेबली टू व्हाट वी डू आवर सेल्फ एस्टीम इन दैट एरिया ग्रोज ओके तो जितेबाला आम कौन करुँच बुझीपर सांगे सांगे जो कमटा कले प्रॉपर मैनर रे बा जो नेगेटिवली न नहीं पॉजिटिव वे रे आम जदि से कामटा को रिप्रेजेंट करुँच देन ऑटोमेटिकली पीपल गॉट रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स आवर वर्क तो जो जगह से भाया कथा रहिबो देन ऑटोमेटिकली वी डेवलप आवर सेल्फ एस्टीम तो आम जो भल काम करुँच सोसाइटी रिकॉग्नाइज करुँच अदर पीपल रिकॉग्निशन करुँच तो ऑटोमेटिकली आम पाखे से सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट होगा स्टार्ट हो तो ये बेसिकली आम मन रखा कौन जो सेल्फ वर्थ बा रियल सेल्फ रो कांसेप्टटा केबे टू स्टार्ट हुए ना अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रु स्टार्ट हुए केमिति स्टार्ट हुए ना बाय द इंटरैक्शंस ऑफ आवर पेरेंट्स स्टार्ट हुए केते गोटा की पॉइंट वर्तमान ठु आम जो जो कथा पढ़िबा सेतिरे किछि किछि की पॉइंट्स को मन रखिबा जोटा कि एग्जाम रे सेही रिलेटेड क्वेश्चन बा सेही की पॉइंट रु ही क्वेश्चन मैक्सिमम आसे तेणु आम मन रखिबा जे सेल्फ वर्थ बा सेल्फ रियल सेल्फ कांसेप्ट केबे टू स्टार्ट हुए ना अर्ली चाइल्डहुड के जो स्टेज रु स्टार्ट हो जाए केमिति स्टार्ट हुए ना इंटरैक्शंस विथ आवर पेरेंट्स रु स्टार्ट हुए तो जतेबेले आमे हमरो कांसेप्ट बा हमरो जो बिहेवियर को अदर सहित कंपेयर करके प्रॉपर्ली ताको मैनेज करि परिबा सेतेबेले आमे सेल्फ वर्थ को बा सेल्फ एस्टीम रो डेवलपमेंट हे परिबो देन कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज सेल्फ इमेज और परसीव्ड सेल्फ how we see ourselves it is the essential मु मो निजो को केमिति देखुची कारण the best evaluator of your life that is only you मु मते मु जेमिति इवैल्यूएट करि परिबी आउ केही सेमिति इवैल्यूएट करि परिबेनी कारण मु जतेबेले बेसिकली आमे कोन करंती ना आमे निजो केबे भूल बोली रिप्रेजेंट करंतीनी जहा भी करूचंती ठीक करूचंती बोली रिप्रेजेंट करंती बट दैट इज नॉट ट्रू when we realize ourselves properly then automatically we find out what are the lacunas and problems behind me मो बिहेवियरल पैटर्न कोन ठीक अछि कोटा भूल अछि से जिंसटा को मु ही रियलाइज करि परिबी तो सेही कथाटा को से कोन कहउछन ना how we see ourselves it is essential for good psychological health जदि आमे सेही जिंसटा को प्रतिदिन मेंटेन करूछन देन ऑटोमेटिकली वी हैव ए गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ डिसाइड करि परिबी मोर को जिंसटा भलो अछि को जिंसटा खराब अछि मु डिसाइड करि परिबी then automatically जोटा खराब अच्छी
तो आम तो केबे भी खराब जिनटा को कंटिन्यू करने चाहिए ना तो से ओवरकम हेले ऑटोमेटिकली आमर ही डेवलपमेंट हम देन इट एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ फंक्शनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी इमेज एंड आवर इनर पर्सनालिटी बोथ द बॉडी इमेज और इनर पर्सनालिटी को आम डिटरमाइन करे किए ना परसिव्ड सेल्फ इट अफेक्ट्स हाउ पर्सन थिंक्स फील्स एंड बिहेव्स इन द वर्ल्ड सेल्फ इमेज does not always match reality okay self image सब बेले reality को match करे नहीं some individuals hold inflected perceptions of one or more their characteristics these inflated perceptions may be positive or negative भी ही पारे negative भी ही पारे an individual may have more positive view of certain aspects of the self and a more negative view of others basically ame that is the general characteristics which we found in every individuals मो उपरे जति कथा अछि मु सेटा सब बेले मैक्सिमम वे पॉजिटिवली नि अदर को जते बेले मो कथा आसे सेते मु ताको नेगेटिवली ही नै जाय तो एई कथाटा को सेल्फ इमेज कथा हमें नै परिबा तो प्रथम आसला सेल्फ वर्थ मोर उडा ऑर्डिनेस अछि सेल्फ एस्टीम अछि दैट इज सेल्फ वर्थ बा रियल सेल्फ तापर आसला नेक्स्ट फेज रे कोन ना सेल्फ इमेज बा परसिव्ड सेल्फ जोटा कि मु कौन जिते बड़े निजक रियलाइज करी मु निजक निजे देखी ओके देख बेले बेले कौन हुए ना आमे बेले बेले टिके डिप्रेस्ड हेले बा किछि टिके आमे टिके मन खराब हेले आमे जाई कौन करूना आईना आगे टिके छिड़ा हेकी निजक देखिले बा एनालिसिस कले ऑटोमेटिकली किछि जिंस रिलीज हो जाए आम पाखर जो एंजाइटी थाए बा आम पाखर जो स्ट्रेसटा थाए टिके टिके किछि मात्रा रिलीज हुए सेटा आमे मिरर रे देखिकी निजक बुझिया पे चेष्टा करंती we analyze ourselves in front of our mirror तो एई कांसेप्ट को हमें कंटिन्यू करिबा देले हमें सेल्फ इमेज को फाइंड आउट करि परिबा बोली रोजर कहउछथि द नेक्स्ट वन इज द आइडियल सेल्फ द पर्सन वी वुड लाइक टू बी ओके हम समस्त लाइफ रे केही ना केही गुटे आइडियल अछंती जहा भलिया हबा पई हमें चेष्टा करंती ठीक अछि तो सेई जो गुटे इमेज जो इमेजटा हमें आम माइंड रे तैयारी करंती जे एई भलिया एई लोक भलिया हमें हबा पई चाहूचंती बा हबा तो से जो इमेज फॉर्मेशन टा कोन को हाउची ना आइडियल सेल्फ इट कंसिस्ट ऑफ आवर गोल एंड एम्बिशंस इन द लाइफ एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड आल्सो एटा गुटे माने जो तमे स्टैग्नेंट पोजीशन लो रखि परिबोनी बहुत लॉन्ग टर्म पर्यंत इट गॉट चेंजेस जते बेला हम वर्क प्लेस चेंज होबो जते बेला हमरो डिफरेंट हैबिट्स चेंज होबो सोसाइटी चेंज होबो देन ऑटोमेटिकली हमकु मध्ये चेंज करिया पई पड़ो निजको सेम टाइम रे हम आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हम भितर जोटा अछि जोटा को हम फिक्स करथिलु आगु ताको मध्ये किछि मात्रा रे चेंज करिया पई पड़िबो एंड दिस प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन देयर इज एन ओवरलैप और डिस्टर्बेंस इन सेल्फ रियल एंड आइडियल तो ए जो बेले बेले कोन हुए ना प्रॉब्लम्स बेले बेले किछि मात्रा रे अराइज हे जाय केते बेले जते बेले ए जो रियल सेल्फ और परसिव्ड सेल्फ मोर सेल्फ एस्टीम को मु जगिबी ना मु निजको निजे देखि कि आउ कहा वे रे ओके माने मते जमिति आउ की खराब न भाबंती से वे रे मु निजको रिप्रेजेंट करिवि सेते बेले टिके कंफ्यूजन हुए आ सेही समय रे आइडियल सेल्फ हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड व्हिच आर अराइज्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियल सेल्फ एंड परसिव्ड सेल्फ मन रखिबा आइडियल सेल्फ कोन करे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हिसाब रे हम पाखरे सब बेले थाए आउ से कोन करे हमकु ना जो हमर रियल सेल्फ एस्टीम आउ जो हमर परसिव्ड सेल्फ जोटा कि आमे आउ जन को देखिया पई चाहउचंती बा आउ जन को पाखर आनुचंती दैट कांसेप्ट भितर जतले कंफ्यूजन आसीबो बा गुटे कॉन्फ्लिक्ट आसीबो तो री आइडियल सेल्फ कोन करे हेल्प करे से कंफ्यूजन बा कॉन्फ्लिक्ट को दूरे देबा पई ठीक अछि दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ then the most important part of this theory that is self actualization theory तो एक्चुअलाइजेशन थ्योरी रे कोन कथा अछि एक्चुअलाइजेशन कोन से जिंसटा को वर्तमान में डिटेल रे स्टडी करिबा सिंस द आइडिया ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज ब्रॉट मोस्ट फुल्ली टू प्रोमिनेंस इन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जोटा मास्लोज हायरार्की ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट समस्त जो माने पढिथिबो देखिथिबो सेइतरे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कथा अछि जोटी निजको निजे जने रियलाइज करी कि माने पूरा जो कोन कहिलो हायर लेवल को जते बेले हम पहुंचीबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस टा गुटे हायर मेंटल ऑर्डर बा हायर ऑर्डर प्रोसेस बोली हम कंसीडर करंती जते बेले निजको निजे हम बुझी जानती जे आमे की आम रोल कोन आमे केमिति हम निजको रिप्रेजेंट करूचंती आम पर्सनालिटी कोन ए सब बाबत जते बेले हम निजे डिफाइन करि दियंती बा आमे जते बेले बुझी जानती
that is concept of self-actualization. Where self-actualization was the highest level of psychological development, here actualization is considered as a stage where full personal potential is achieved. যেতବେଳେ full personality আমার development ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁହନ୍ତି we are in the state of self-actualization. And that occurs only after basic and mental needs have been fulfilled. ଆଉ ଏଇ କଥାଟା କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେସିକ୍ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ନିଡ୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ. ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମର ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ଫୁଡ୍ ସେଲ୍ଟର କ୍ଲୋଥ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ଅଛି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ନିଡ୍ସ ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ we found that individual have got at the stage of self-actualization. However, Goldstein has put on in this way the tendency to actualize itself as fully as possible in the basic drives, the drive of self-actualization. Carl Roger taku kahile similarly wrote the curative force in psychotherapy man's tendency to actualize himself, to become his potentialities, to express and activate all the capacities of the organism. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିଯିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ actualize କରିଦେବି at that time we can find our own inner potentiality. ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର personality ହଉ ବା ମୁଁ ମୋର behaviorକୁ manage କରିପାରିବି ବା organize କରିପାରିବି ବା maintain କରିପାରିବି. That is totally upon the individuals. गोटे निजर माने इंडिविजुअल पाखरे सेही कैपेसिटी अछि जेतेबेले से हाईएस्ट फॉर्म को पळेबो एक्चुअलाइजेशन पोजीशन को पळेबो निजको रियलाइज करि पकेबो निजको रियलाइज कला परे से सब कथा को कंट्रोल करि परिबो तार बिहेवियर को तार एटीट्यूड को एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय दैट इंडिविजुअल. देन कुल्टर इट एल कहले he defined the self actualization as the psychological process aimed at maximizing the use of the person's ability and resources. तो ये जो actualizing process कौन करे ना गोटे psychological process जे psychology process टा maximize कर दिए आमर गोटे ability बा resources आम पाखे जहाँ अच्छी ताकू use करिवार maximum point को हमको नहीं जाए. This process may vary from the one person to another. That is self actualization कहाँ पाखे केमिति होची कोन rate रे होची that also different in different human beings. Putting it differently, self-actualizing is the full realization of one's creative, intellectual, social potential through internal drive, okay, versus for the external rewards like money, status, power. ए कथा को सेठी देखा जीवनी. Internal drive, निज भितरु जो कथाटा आसुची, ता creativity को से fully enhance करी परिबो, intellectually fully से intellectual process को use करी परथुबो, social potential को से properly show करी परथुबो. जेतेबेले करूची से individual सेतेबेले self actualization process रे अछि बोली हम कहि परिबो. Then Carl Roger used the term self actualization and described it differently as the idea developed by Maslow. The actualization is the individual sense of self. निजको निजे जेतेबेले सिए बुझुची सेही प्रोसेस टाकू self actualization बोली हम कहिबा. The Rogers theory of person centered therapy, self actualization is the lifelong process of maintaining and enhancing individual self concept through reflection, reinterpretations of experience, allowing the individuals to recover, develop, change and grow. concept को बुझो इट भलो भाबरे ए जो थियोरी देला जोटा कि पर्सन सेंटर थेरापी बोली हम कहि परिबा. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टा लाइफ लॉन्ग चले. आमे डेली बेसिस रे किछि ना किछि रियलाइज करूचंती निज भितरे आ गोटे पोजीशन जो अपग्रेड निजु करूचंती. हम पर्सनालिटी को हम बिहेवियर को विभिन्न डेवलपमेंटल पैटर्न को हमें कोन करूचंती ना अपग्रेड करूचंती. जेमिति हमें जानिचंती डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट होउची. तो जदि डेवलपमेंट होउची ता माने हमें निजको निजे बुझिया पय चेष्टा करूचंती ए डेवलपमेंटल प्रोसेस रे. ताले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आल्सो is a lifelong process to maintaining and enhancing the self concept. निजरो जो concept अछि ताकू enhance करिया पय through reflection, reinterpretation of experiences. जो experiences अछि ताकू reinterpret करिबा ताकू बारंबार बुझिबा देखिबा जानिबा and allowing the individual to recover, develop and change and grow. आउ जदि किछि भूल भाल अछि बा कोठी ठीक अछि ताकू केमिति चेंज करि होबो
बा ताकू आउ केमिति आउ टिके भलो करी हबो मॉडिफाई करी हबो रॉन्ग कांसेप्ट को आमे केमिति राइट कांसेप्ट रे कन्वर्ट करबा ए सब कथा को आमे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस रे ही करि परिबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ए सबसेट ऑफ द ओवरऑल organismic actualizing tendency and begins with the infant begins ए जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन केबे टू स्टार्ट हुए ना इन्फांट लर्निंग जेतेबेले पिलाटी जन्म होबा परे परे जस्ट जन्म होला परे परे ठू एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए टू डिफरेंट व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज अदर within the total perpetual field as their full self awareness gradually crystallizes the organism has one basic tendency and striving to actualize maintain and enhance the experiencing organism तो सेल्फ एक्सपीरियंस बा सेल्फ ऑर्गेनिज्म प्रोसेस रे ही आमे निजकू प्रॉपर वे रे बुझिबा आउ केमिति आम निजकू निजे रिप्रेजेंट करिबा सोसाइटी रे हो बा आम निज आगरे से कथा को हम डिटरमाइन करि परिबा बाय द हेल्प ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन with this a person interacts with the environment okay and through the process of evaluation the structure of the self is formed which an organized fluid but consistent conceptual pattern of perceptions of characteristics and relationship of I and me okay I और me भीतर relationship establish केते बेले हे परिबो जेतले हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस रे इन्वॉल्व हे जिबा बा करि परिबा टुगेदर विथ द वैल्यू अटैच्ड दिस कांसेप्ट्स लाइफ लॉन्ग तो लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस टा कंटिन्यू हे की चले तो दीज आर द बेसिक कांसेप्ट रिलेटेड टू जो कार्ल रोजर्स थ्योरी बाय ह्यूमनिस्टिक थ्योरी तो कार्ल रोजर को जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी थिला जे कि वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द मास्लोज हायरार्की डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी सितु इंस्पायर ही कि कार्ल रोजर भी तांकर ओन पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोसेस बा थ्योरी देले तो सही कांसेप्टटा किछि देखि दबा हमें रोजर आर्ग्यूड द अनकंडीशनल पॉजिटिव regards plays crucial role in the development of the self okay तो अनकंडीशनल पॉजिटिव regards plays an crucial role in the development of self concept अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जते पर्यंत न आसी सेते पर्यंत हम सेल्फ कांसेप्ट रो डेवलपमेंट करि परिबा नाही काल्स कहले एंड पीपल हु आर नर्चर्ड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दैट इज एक्सेप्टेंस रेस्पेक्ट सिंपैथी लव रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस केमिति रहउची तमे केमिति बिहेव करूचो तमरो एजुकेशनली हो बा अदर वे रे जो तम परफॉर्मेंस कोन रहउची ताकू आमे न देखिकी जते बेले गुटे हेल्दी एनवायरनमेंट रहिबो जो एनवायरनमेंट रे कोन थिबो ना एक्सेप्टेंस थिबो रेस्पेक्ट थिबो सिंपैथी थिबो देन ऑटोमेटिकली गुटे ह्यूमन बीइंग रो सेल्फ डेवलपमेंटटा साउंड रहे बोली हमें कहि परिबा have an opportunity to fully actualize themselves however people raised in the environment of conditional positive regards parents or society insisted that the person is valued for what he or she does not for who he or she is तो बेले बेले कौन हुए ना सोसाइटी हो बा पेरेंट्स हो तांको इन्फ्लुएंस रे मध्ये आमे गुटे कंडीशनल फील्ड बा कंडीशनल जो स्टेज आमे तयारी करंती डेवलपमेंट रे बट दैट इज नॉट हेल्दियर देन द अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स द पर्सन इज फील worthy only if they match conditions okay तो सही कथा सी कहूची जे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैन बी अंडरस्टैंड इन टर्म ऑफ सेल्फ and fully functioning persons Roger has defined a fully functioning person's as ଗୋଟେ fully function बा fully developed personality वाला person को Roger केमिति define कले fully functioning persons are aware of all experiences तार सब experience बाबदरे से aware हिथिबा दरकार fully functioning persons have a fully and richly with in every moment सबु मोमेंट सहित सी एडिक्वेटली एडॉप्टेड ही परथो इजीली एडजस्टेड ही परथो ताको हमें फुल्ली फंक्शनेट इंडिविजुअल बोली कहि परिबा फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन्स ट्रस्ट देयर ऑर्गेनिज्म एंड डू नॉट गेट गाइडेड बाय अदर्स ओपिनियन जते बेले जने फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन्स बाय इंडिविजुअल सी निजो को निजे गाइड करे ता नुहे जे सी आउ कहा द्वारा गाइडेड हुए ओके fully functioning persons feel free to make choice without constraints or inhibitions and do not get compelled by anything कौन सी जिनिस हो कौन सी लोक हो कहा बाबद से कंपेल्ड हुए नहीं
सी ता चॉइस को निजे तैयारी करे ओके सी बुझी कारण एक्चुअलाइजेशन आसीगला मात्रे हायर लेवल को से पळेला हायर लेवल को जदि सी जाउची ताले सी निजे बुझी परिबो जे व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग तो जिते से स्टेज रे से पहुंचो देन ऑटोमेटिकली तार पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो सी आउ कहा द्वारा गाइड होबार किसी माने जो प्रश्न ही उठू नहीं देन फुल्ली functioning persons are creative and live constructively or adaptively to environmental conditions जो माने fully functioning persons थांती they can easily maintain their life or आमे कोई परिबा they can constructively maintain their life or easily adopted in different environmental conditions and situations fully functioning persons may face difficulties ओके बेले बेले कौन हुए ना यही भाया कथा जिते आम निजक जो निजे बुझी पार्टी निजर स्ट्रेंथ्स वीकनेस को रियलाइज कर निजर बिहेवियरल पैटर्न को कंट्रोल कर बेले बेले कौन हुए ना से सब कथा माने अदर इंडिविजुअल जो माने आम सराउंडिंग रे अच्छे भल न लगी पारे से किसी डिफिकल्टीज एराइज हो पारे तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी बाय कार्ल रोजर से कथा कहते पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने पूर्व आगे निजर एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस को डेवलप करने पड़ो तापर ऑटोमेटिकली जड़े जो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन्स हो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन्स ऑलवेज मेंटेन ए गुड पर्सनालिटी देन अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रोजर्स थ्योरी दैट इज इनकंग्रुएंसी दीटा कथा ये डिस्कशन हम अकॉर्डिंग टू रोजर्स we want feel experience and behave in the way which are consistent with our self image and which reflects what we would like to be like our ideal self देखो आमे जते बेले फील करूचंती बा एक्सपीरियंस करूचंती बा बिहेव करूचंती से सब कथा आम वे रे रहउची जोटा कि आमको भल लागे बा आमे जो आइडियलिस्टिक अप्रोच को बिलीव करंती बा जहा को आइडियल हिसाब रे नैचंती तार जो प्रोसेस बा सी जो भाया प्रोसेस को फॉलो करते से हिसाब से आम निजक निजे तैयारी करने चेष्टा कर तो से जो कॉन्सेप्टा कहूँ द क्लोजर ऑफ आवर सेल्फ इमेज एंड आइडियल इमेज आर टू ईच अदर तो से कौन हुए ना जो सेल्फ इमेज थाए आउ जो आइडियल इमेज थाए से दीटा क्लोजर हो जाती ओके एंड द मोर कंसिस्टेंट और कॉन्ग्रुएंट वी आर एंड द हायर ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ the development of congruence is dependent on unconditional positive regards ये जो congruency रो डेवलपमेंट होची गुटे इंडिविजुअल पाखरे सी तार सेल्फ इमेज आउ रियल आइडियल सेल्फ ए दीटा को सी बुझी पारुची आउ ताको कंबाइन करि पारुची गुटे इंडिविजुअल जते बेले सेल्फ इमेज जोटा सेल्फ एस्टीम थिला तार बा जोटा आइडियल सेल्फ जो जो भलिया से होबा पई चाहूची क्या गोटे आइडियल हिसाब से कनसीडर कर सी निजको निजर पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने चाहूँगी जिते यही दुटा जिन से कंबाइन करदे देन ऑटोमेटिकली दैट इंडिविजुअल बिकम ए गुड पर्सनालिटी बा गुड इंडिविजुअल्स और आम कहीपर जे सोशियली एक्सेप्टेड इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल को सोसाइटी एक्सेप्ट कर इजिली तो से भाया पार्ट को आमको जावाई पड़ो बोली कहते हम से जिनसा कॉन्ग्रुएंसी केस रे आ से कॉन्ग्रुएंसीटा केतेबेले हुए जेतेबेले आमे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स रे थांती गुड गुड बेटर एनवायरनमेंट आमे जेतेबेले पाती एट दैट टाइम वी कैन कॉन्ग्रुएंट बोथ द सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ द स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पाखरे पहुंचीबा पई हेले द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कॉन्ग्रुएंस को मेंटेन कले ही आमे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस रे पहुंची परिबा एथरू क्वेश्चन आसी परिबो तेनो पॉइंट को हम टिके मन रखिबा द स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज एसेंशियल फॉर द अचीविंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस रे पहुंचीबा पे हेले हमको कॉन्ग्रुएंस रे रहबा पे पड़िबो ता माने हमरो सेल्फ इमेज और आइडियल इमेज को क्लोजर आनिबा पे पड़िबो मिसेइबा पे पड़िबो दीटा कथा को गोटे फ्रेम रे रखी कि हमें रियलाइज करिया पे पड़िबो इन फैक्ट many a time a person's ideal self may not be consistent with what actually happens in the life and experience of the person. Therefore, difference may exist between the person's ideal self and actual experience. तो ideal self गुटे आमे हिसाब रे आमे रखिछंती बट जतबेले आमे किछि एक्सपीरियंस नेले और से एक्सपीरियंस टा सुइटेबल हेलानी आइडियल सेल्फ हिसाब रे जोटा आमे भाबिथिले से जिंसटा सेटी सैटिस्फाई कला नाही एंड दिस इज नोन एज इनकंग्रुएंसी एट दैट टाइम जो कॉन्सेप्ट आसीबो
जितेबाला आम आम आइडियल सेल्फ आउ एक्चुअल एक्सपीरियंस भितर डिफरेन्स को देखा से जो कॉन्सेप्ट से जो स्टेज को आम कहीपर कौन ना इनकंग्रुएंसी स्टेज डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन discrepancy between the actual experience of the organism and the self picture of the individual. तो ये कौन हम ना जो एक्चुअल एक्सपीरियंस अच्छी आउ गोटे ऑर्गेनिज्म रो आउ सेल्फ पिक्चर जोटा अच्छी इंडिविजुअल रे ता भीतर गोटे डिफरेंस आसी होला कि डिस्क्रिपेंसी माने हला जो डिफरेंस कथाटा को सिटी बुझौछि therefore in order to see themselves in way that are consistent with our self image we may use defense mechanism like denial perceptual distortions then repressions in order to feel less threatened by some of what we consider to be our undesirable feelings. देखो जितेबाला आम किसी गोटे भूल काम करुँच जितेबाला आमर ओन एक्सपीरियंस और आइडियल सेल्फ भितर गोटे लार्ज गैप क्रिएट हो जाऊँगी गोटे डिफरेन्सेस आसी जाऊँगी एट दैट टाइम आम पाखे गोटे अनहेल्दी फिलिंग्स अनडिजायरेबल फिलिंग्स आसवाटा गोटे स्वाभाविक कथा एट दैट टाइम जितेबाला से भाई प्रकार फिलिंग्स आसे आम कौन करूँ आम डिफेन्स मेकानिज्म को एप्लाई करूँ ए पर्सन इज सेड टू बी in a state of incongruency if some of the totally of their experience is unacceptable to them and is denied or distorted in self image. For example am बुझी परिबे एक एग्जांपल देला आउट के क्लैरिफिकेशन हो जिवो the self congruency कोन ना I am a good student, I see myself that way, I enjoy it, I strive to become even more of way, I enjoy it, I strive to become even more a scholar. तो जितेबाला मोर कॉन्फिडेंस आसुची मु एई कामटा करि परिबी सक्सेसफुली बा मोर आइडियलिस्टिक मु जो आइडियोलॉजी को फॉलो करूथुली से आइडियलिस्टिक पाथ रे मु अछि आ मु सेई रास्ता रे गले आगो को मोर डेवलपमेंट हबो ही हबो एई स्टेट रे जितेबाला रहिबो जणे अर्थात सेल्फ इमेज आ आइडियल सेल्फ को जितेबाला से मर्ज करिक रखुथुबो सेई स्टेट टा को हम कोन कहंती सेल्फ कॉन्ग्रुएंसी कहंती सेल्फ इनकॉन्ग्रुएंसी केतेबाला हबो I strive to be a good student, I do not like studying. मु चाहूची गोटे भलो स्टूडेंट होबा पे दैट इज माय आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू और आइडियल सेल्फ बट मते पढिया पे भल लागु ता माने मोर सेल्फ इमेज टा वीक अछि तले एटी आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज भीतर गोटे गैप क्रिएट हला द पीपल सी मी एज I don't like studying, people see me as a student though. ठीक अछि ये जो गोटे गैप क्रिएट हो कौन से कारण भी गैप क्रिएट हो जब गैप क्रिएट है ताले सेल्फ इनकंग्रुएंसी होगा बुझिबा कथाटा को सेल्फ कंग्रुएंसी केतेबेले होबो जेतेबेले सेल्फ इमेज आ आइडियल सेल्फ मु गोटे भलो स्टूडेंट मु भलो एग्जाम रे करिवि तो भलो स्टूडेंट दैट इज माय सेल्फ इमेज मु गोटे स्कॉलर हेबी तो मु को गोटे स्कॉलर को फॉलो करूची तार आइडियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट को मु फॉलो करूची से भलिया से जेमिति गोटे गुड स्कॉलर हेची मु से भलिया स्कॉलर टे हेबी तो एई दिटा कांसेप्ट रे जेतेबेले मु रिलेट करिकि चालिबी क्लोजनेस आनी कि से दिटा कांसेप्ट को साइमल्टेनियसली मो लाइफ रे नेकी जिबी सेतेबेले मोर सेल्फ कंग्रुएंसी रहइबो मु चाहूची गोटे स्कॉलर हेबी गोटे भलो स्टूडेंट हेबी मते पढिया पे भल लागु मु भलो पिला हेबी चाहूची दैट इज सेल्फ इमेज बट मु जो मोर एक्सपीरियंस लाइफ एक्सपीरियंस जोटा रहउची सेटा याठू दूरेई कि जाउची तो सेतेबेले कोन होबो ना ऑटोमेटिकली वी हैव ए लार्ज गैप बिटवीन द सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ सेतेबेले सेल्फ इनकंग्रुएंसी स्टार्ट हो जिवो तो ये फिगर रे आउ टिके आमे क्लैरिफिकेशन करि परिबा सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ इनकंग्रुएंट केस रे जो ए दिटा भीतर जो कनेक्शन टा अछि लेस कनेक्शन एटा लेस कनेक्शन कंग्रुएंसी रो लार्ज कनेक्शन बिटवीन द सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ देखो एटी बुझिबा द सेल्फ इमेज इज डिफरेंट टू द आइडियल सेल्फ इमेज टा आइडियल सेल्फ रु डिफरेंट रहिबो देयर इज ओनली ए लिटिल ओवरलैप ए जो ओवरलैप टा अछि बहुत स्मॉल अमाउंट रहिबो द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज will be difficult at that time self actualization टा difficult रुहे कारण सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ भितर किछि रिलेशन हम एस्टैब्लिश करि परंतिनी कंग्रुएंसी केस रे सेल्फ इमेज और सेल्फ आइडियल सेल्फ भितर गुटे क्लोजनेस आसीबो सेल्फ इमेज इज सिमिलर टू द आइडियल सेल्फ मु जहा भाबुची मो पाखरे सेही कामटा करिवार कैपेबिलिटी अछि बा मु करि परिबी एंड देयर इज मोर ओवरलैप एटी ओवरलैप टा अधिक रहउची एंड द पर्सन्स कैन सेल्फ एक्चुअलाइज इनकंग्रुएंसी रे एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस कमी जीवो कंग्रुएंसी रे एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस बढ़ी जीवो
सेल्फ इमेज आउ आइडियल सेल्फ रिलेशन टा माने डिफरेंसेस टा अधिक रहइबो इनकंग्रुएंसी रे कंग्रुएंसी रे सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ भीतर रिलेशन टा टिके अधिक रहइबो दैट इज द डिफरेंस apart from this Roger has suggested two types of needs that determines their behavioral goals they are maintenance need and an enhancement needs दीटा जिंस ऊपर से फोकस कले जोटा कि बिहेवियरल गोल को फोकस करे जोटा कि मेंटेनेंस नीड आ उठे हला एनहांसमेंट नीड्स फॉर अजर लाइफ हैज वन बेसिक ड्राइव सर्वाइव ग्रो एंड डेवलप मेंटेनेंस नीड कोन वर्तमान देखिबा द नीड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंडिविजुअल्स with this the individual takes care of themselves through satisfying various basic needs such as biological and security needs that is called maintenance need and every individuals have such type of needs समस्तଙ୍କ पाखरे maintenance needs अछि सेहित पई आमे आजि पाठटे पढुचंती जॉब पई टिके ट्राई करूचंती जॉब टे कले आमे कोन करि परंती ना हम लाइफ को प्रॉपर्ली मेंटेन करि परिबा केमिति मेंटेन करिबा ना हमर बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करि परिबा फूड शेल्टर क्लोथ ए सब जिंस को प्रॉपर्ली मेंटेन करि परिबा फुलफिल करि परिबा एट द सेम टाइम सिक्योरिटी को मध्ये मेंटेन करि परिबा भलो घरटे करिबा भलो गाडीटे किनिबा सिक्योर फील करिबा तो एई सब जिंस को मेंटेन करूचन जो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस नीड apart from this the person who make an attempt to maintain those experiences that helps them in preserving their self therefore आउ ए जो मेंटेनेंस नीड रे कोन हुए ना सेल्फ को प्रिजर्व करि जण रखि परिबो therefore the thoughts that the harmful are generally opposed by the persons asila tapare enhancement need kono the individual try to maintain their self concept thereby developing and extending their self the nijo ku se kon karibo develop karibo au extend karibo enhancement needs are expressed through curiosity self exploration maturation and friendship बुझिबे कथाटा मु मोर मो पाखरे जो कथाटा अछि ताकू मु सेही जगह न रखी ताकू एनहांसमेंट करिवि तो से एनहांसमेंट करिवा पई हमकु किए हेल्प करे ना मो क्यूरियोसिटी हेल्प करे मु गोटे कथा जानि छी मते जतल सेही जिंस बाबदरे टिके इंटरेस्ट रहिबो बा इंटरेस्ट बढ़िला मोर क्यूरियोसिटी बढ़िला तो मु जतल क्यूरियोसिटी बढ़िला मु बहुत कथा आउ जानिया पई चेष्टा करिवि तो मु मोर कोन कली मोर जो पेरिफेरीटा थिला बा मो एरियाटा को मु एनहांसमेंट कली देन सेल्फ एक्सप्लोरेशंस निजु निजे एक्सप्लोर करिया पई चाहू आउ किछि रुए कोन ना जतले मैच्योर जने हुए आपे आपे बहुत कथा एक्सप्लोर करी जाए फ्रेंडशिप जो पीयर ग्रुप आल्सो हेल्प्स इन एनहांसमेंट नीड्स एंड दिस नीड्स डज नॉट प्रोवाइड्स इमीडिएट रेनफोर्समेंट आउ ए जो नीडटा इमीडिएट रेनफोर्समेंट दिए ना ओके सो दीज आर ऑल अबाउट कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यही कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम रे आसे तो सेतिकी कथा में देखि देले सफिशिएंट रही देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट एमसीक्यूज केतोडा क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन को हम वर्तमान डिस्कशन करिया द फर्स्ट क्वेश्चन बिकमिंग ए फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन इज द कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्डेड बाय फुल्ली फंक्शनिंग कॉन्सेप्ट को किए नै के आस्तिले कार्ल जंग अब्राहम मास्लो कार्ल रोजर अल्फ्रेड तो ऑब्वियसली फुल्ली फंक्शनिंग कॉन्सेप्ट आम ऑलरेडी डिस्कशन करके आछंती कार्ल रोजर द ऑप्शन इज सी कार्ल रोजर देन सेकंड क्वेश्चन तो जो माने क्वेश्चन को आउट के भलो भाव देखिया पई चाहूछ पोज मारी की क्वेश्चन गुडा को लिखि परिबो ठीक अछि देन अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड्स बहु बार आमे अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड बाबद डिस्कशन करी आसले फॉर द क्लाइंट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड काउंसलर दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ कहार एक्सपेक्टेशन थिला रोजर को एक्सपेक्टेशन थिला ओके द ऑप्शन इज ए द थर्ड क्वेश्चन the technique in respect of human learning concept the technique in respect of human learning concept advocated by Carl Roger was given in the caption को caption रे थिला human learning context मने पकेबा तो ऑप्शन हला self regulating learning बुझिबा self regulating learning that is the answer
रिसेप्शन लर्निंग सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग डिस्कवरी लर्निंग यही बाबद किसी भी कथा डिस्कसन होनी ओनली वी डिस्कस थ्रू आउट द क्लास अबाउट सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस निजक निजे बुझा निजक निजे रेगुलेट करवा निज बिहेवियर को कंट्रोल करवा सब निज उपर ही कथा थिला तो ऑप्शन सब बेले जितेबाला ह्यूमन लर्निंग कंटेक्स्ट रे कथा आसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे बा कार्ल्स रोजर अप्रोच रे देन आंसर हम सब बेले सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग कौन सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग रेफर्स टू one's ability to understand and control one's learning environment okay one's ability to understand निजर कंट्रोल रहिबो निजर बुझिबा प्रोसेस रे आउ लर्निंग एनवायरनमेंट रे सेल्फ रेगुलेशन एबिलिटीज इंक्लूड्स गोल सेटिंग सेल्फ मॉनिटरिंग सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ रेनफोर्समेंट सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग इज वन ऑफ द डोमेन्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन and is aligned the most closely with educational aims. Broadly speaking, it refers to learning that is guided by metacognition process. Okay, self learning process रे ही बा self जोटा आम कहि परंती एनालिसिस प्रोसेस रे ही जो हेई पारे कोन सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग एंड स्ट्रेटेजिक एक्शंस एंड मोटिवेशन टू लर्न एंड लर्निंग. Okay. Then the next question, the technique in respect of human learning context is advocated by Carl's. Oh, sorry, question double he jai. Sorry. Oh, sorry. No, question double. এটা থিলা human learning context. क्वेश्चन रिपीट है लेट इट इन द टेक्निक ऑफ पर्सन्स सेंट्रल काउंसलिंग तो कार्ल्स रोजर जो गोटे काउंसलिंग कॉन्सेप्ट मध्ये अछि ठीक अछि तो द टेक्निक ऑफ पर्सन्स सेंट्रल काउंसलिंग द कॉन्ग्रुएंस इज रिलेटेड टू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स मैचिंग बिटवीन फेशियल एक्सप्रेशन और वर्ड्स एम्पैथी टुवर्ड्स द क्लाइंट देन रिफ्लेक्सिव एक्ट्स कोनटा हबो सेंट्रल काउंसलिंग कथा कहूची तो ऑब्वियसली आंसर हम बी मैचिंग बिटवीन फेशियल एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स मन को निश्चित भाव में आसो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स कारण आम बारंबार से कथा बाबद डिस्कसन कर तेणु हठात मन को ये आंसरटा ही आसो बट द आंसर इज मैचिंग बिटवीन फेशियल एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स बिकज हियर वी डिस्कस अबाउट द सेंट्रल काउंसलिंग पैटर्न काउंसलिंग कौन सेंट्रल काउंसलिंग कौन काउंसलिंग बाबद में कार्ल्स रोजर कौन कथा थिला बर्तमान टिके हेल्प देखि दियो. Carl Roger was a humanistic who proposed the person's central counseling. He proposed the same believing that the client could be better helped if they are encouraged to focus on their current subjective understanding. जेतेबेले गोटे पिला बा गोटे क्लाइंट गोटे इंडिविजुअल बुझी परिबो जे सी तार करेंट सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कौन अच्छी करेंटली से कौन स्टेट रे अच्छी तार जो अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन अच्छे से बुझी पार देन ऑटोमेटिकली से भल परफॉर्म कर. ए काउंसलर शुड बी वार्म जेन्युइन एंड अंडरस्टैंडिंग in order for the client's condition to be improved. This approach is called client centered or person centered because Carl wanted to focus on the person's subjective view of the world. जो काउंसलर आम गाइडेंस काउंसलिंग जो पढ़ी B.Ed रे मन पकेबा आमे गोटे काउंसलर जो गोटे इंडिविजुअल को बुझिला तार प्रॉब्लम तार सॉल्यूशन से सब जिन को से निजे रियलाइज करी से पर्सन को जो से कथा गुड़ा को रियलाइज करवा आगुरी क्लाएंट रो सब्जेक्टिव वर्ल्ड को आगे बुझा दरकार. गोटे काउंसलर क्लाएंट रो जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड ता माइंड रे को वर्ल्ड से तैयारी करछि से कांसेप्ट को जो बुझिबो देन से इजीली ताको हेल्प करि परिबो प्रॉपर काउंसलिंग करि परिबो. Congruency is called genuineness. It is used counselor with the aim to let the client experience them as they really are. Okay, तो जो genuineness कथा कहिला congruency is also called genuineness. It is used by the counselor. Counselor ताको use करिवो to aim with the aim to let the client experience them as they actually are. से माने कोन actually गुटे client इंडिविजुअल कौन
सेही कथा जो रियलाइज करिवो सेतेबेले तार जो एक्सपेक्टेशन थिवो जदि मु ओभर एक्सपेक्टेशन करदेबी जोटा मो कैपेबिलिटी भितर नाही मु किंतु एक्सपेक्टेशन करूची गोटे पिलाटे एवरेज बा बिलो एवरेज कैटेगरी अछि किंतु तार एक्सपेक्टेशन अछि कोन से गोटे डॉक्टरटे हो दैट इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर दैट इंडिविजुअल कारण से बिलो अचीवर्स अछि ताको से लेवल ले पहुंचेई कि ताको डॉक्टरटे करिबा जदि न होला ताले से कोन होबो ना डिप्रेस्ड हे जिवो पाठ पढुची सब करूची ताको जदि आमे तार ओन कैपेबिलिटी को जदि प्रॉपर्ली काउंसलिंग थ्रो रे न जणेबा ताले ऑटोमेटिक से कोन होबो ना से लागिथिबो लागी फेलियर होबो फेलियर हेले से डिप्रेशन को जीवो तो दैट इज द नेगेटिव कांसेप्ट फॉर दैट इंडिविजुअल तो सही कथा से कहूची इट इज यूज्ड बाय द काउंसलर विथ द एम टू लेट द काउंसिल क्लाइंट एक्सपीरियंस देम एज दे आर रियली कोन से माने सही कथाटा को प्रथम हम ताको रियलाइज करिया पे पड़िबो the therapist does not have facet the internal and external experience are the same which means that the experienced is expressed also जो experience टा अछि ताको expressed करी होबो the facial expression match with the words spoken in the counselor जते बेला काउंसलर काउंसलिंग करथुबो पिला को कार्ल रोजर कहया कथा जे गुटे एज ए काउंसलर जते बेला गुटे से क्लाइंट को डील कर क्लाइंट सहित डील करछ एट दैट टाइम जो कथाटा से कहूथुबो ता फेशियल एक्सप्रेशन रु भी सेम कथा देखा होतो मु रागुची मो फेशियल एक्सप्रेशन रु राग देखा होतो मु रागुची कि तू हसतुबी तो से काउंसलर टा प्रॉपर्ली क्लाइंट को सही टाइम रे काउंसलिंग करि परिबो नाही बा क्लाइंट गुटे माने सीरियस कथा को डिस्कशन करूची क्लाइंट काउंसलर सहित बट काउंसलर ताको गुटे माने हसी की ताको गुटे देखुचंती तो सीरियसनेस नाही तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट टा बुझी जिवो जे काउंसलर मो कथा किछि सुनु नाथि तो सेल्फ फेशियल एक्सप्रेशन इज वेरी इंपोर्टेंट एट दैट टाइम therefore the technique of the person centered central counseling रे तो the congruency is related to the matching between facial expression and the words जो जेमिति facial expression थिबो words मध्ये सेमिति थिबो जते बेले से ओरिड होतबो तार वर्ड रे ओरिडनेस थिबो तार फेशियल एक्सप्रेशन रे ओरिडनेस थिबो से जते बेले खुशी होतबो ता फेशियल एक्सप्रेशन रे जॉयनेस थिबो ता वर्ड रे मध्ये जॉयनेस थिबो तो एई सब कथा को मेंटेन करिवा कोठरे ना काउंसलिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड पर्सन सेंट्रल काउंसलिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर व्हाट आर द थ्री सेंट्रल assumptions of the humanistic phenomenology schools of thought थ्री सेंट्रल assumptions कौन कौन the individual has what are the three central assumptions of the humanistic phenomenological school of thought the individual has destructive potential the individual is passive in realizing potential the individual's nature is determined by the external forces the individual has constructive potential तो कोनटा ठीक होबो मने मने भाबो that is the answer D constructive potential तो constructive potential थिले ही we can identify myself मु निजो को निजे बुझी परिबी ओके what are the एडी one of the हितांता one of the three central assumptions भितरु जणे हला के ना constructive potential okay individual have constructive potential then what is the role of the environment in Carl Roger self concept theory रे environment रो role कोन environment is irrelevant to the individual's development irrelevant environment is solely responsible for the individual's behavior solely eka environment plays a facilitating or inhibiting role play a facilitator हिसाब रे काम करे the environment has no impact on the individual self concept किछि impact नाही ओके आंसर सी कारण irrelevant नुहे environment केबे भी एकुटिया environment responsible नुहे बा environment से कुछ no impact जो सेल्फ कॉन्सेप्ट रो डेवलपमेंट पई जो एनवायरनमेंट रो किछि इंपैक्ट नाही सेटा भी भूल प्ले ए फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट रिसोर्सेस where we inhabitant ourselves हम निजोकर जो इनहेबिटिंग रोल अछि ताकू सैटिस्फाई करिया पई जो कंडीशन बा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे किए प्रोवाइड करे ना एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे दैट्स व्हाई द आंसर इज सी व्हाट इज द सेल्फ कांसेप्ट अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर कार्ल रोजर के हिसाब रे सेल्फ कांसेप्ट कोन
the physical and psychological functions of an individual. Physical and psychological functions of individual as self. The perception of others about individuals. आउ जनक बाबद परसेप्शन करवाटा है सेल्फ कॉन्सेप्ट. The picture individuals have of themselves. Picture individuals have of themselves. The ideal self an individual aspire to be. मु केमिति हेबी आइडियल सेल्फ मते डिफाइन करबस. तो एई चारिटा भितरु कोनटा हमर सेल्फ कॉन्सेप्ट कार्ल रोजरकर. The answer is C. The picture individuals have of themselves. That is the self concept. मु किए मु जेतेबेले मोर निजर पिक्चर को ड्रॉ करि परिबी. ठीक अछि. धर जो आम मन को मु गुटे धर जो मु तुमको एपीजे अब्दुल कलाम. तो जेतेबेले तांको नाटा मु कहूची जेतेबेले तांकर इमेजटा तो माइंड रे फॉर्मेशन होउची सेतेबेले तांकर सब भलो गुण तुमको मने पडुथबो जे सी सेमिति कथरा मने पडुची. तो सेम वे जेतेबेले सेल्फ कॉन्सेप्ट कथा आसीबो मु जेतेबेले मोर इमेज को मु मेंटली तैयारी करि परथबी एब्स्ट्रैक्ट मैनर रे. तो सेतेबेले सेही कॉन्सेप्ट को सेल्फ कॉन्सेप्ट बोली हम कहि परिबो. सेही पय रुची द पिक्चर individual have of themselves. Then the next question, what is the actualizing tendency in Carl Roger theory? Actualizing tendency Carl Roger ko theory re कोटा. The inherent tendency of organism to maintain and expand themselves. Inherent tendency से कुछ actualizing जोटा कि maintain और expand themselves. It need for positive regards from others. The role of self concept in determining behavior, the striving for the progress and achievement, actualizing. Okay, the answer is A. The inherent tendency of organism to maintain and expand themselves. निजो को मेंटेन करिबा और एक्सपांड करिबा ऑलरेडी हम डिस्कशन करके आछंती. यदि एटी किछि प्रॉब्लम होछि तो तमे जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग प्रोसेस रे थिला सेठी जाई रेफर करि परिबो. The next question, what are two basic needs underlying and directing behavior according to Carl Roger? Basic needs underlying and directing behavior according to Carl Roger. The needs of power and control over others. Power कथा रहिबा आ अलगा समस्त को हम कंट्रोल करिबा. The need of approval from others and the need of material possessions. The need of the social status and recognition, the need of positive regards and others, and need of the positive self regards. तो ऑप्शन तुम मान को आस जाइथिबो ऑप्शन डी हम जस्ट डिस्कशन करके आस्थिले जे पॉजिटिव रिगार्ड्स बेसिक नीड्स जेतेबेले अंडरलाइंग होबो बा जो बिहेवियर को डायरेक्ट करे किए ना जेतेबेले पॉजिटिव रिगार्ड्स फ्रॉम द अदर्स एंड नीड्स फॉर द पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड. अदर पॉजिटिव रिगार्ड को हमें फॉलो अप करबा निजर पॉजिटिव रिगार्ड को मेंटेन करके जीवा सेल्फ रिगार्ड को मेंटेन करके जीवा देन ऑटोमेटिकली बेसिक नीड्स को हम फुलफिल करि परिबा. टू बेसिक नीड्स अंडरलाइंग द एंड डायरेक्टिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द कार्ल रोजर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज congruence in कार्ल रोजर. व्हाट इज congruence in कार्ल रोजर थ्योरी. कार्ल रोजर थ्योरी congruence टा कोन कांसेप्ट थिला. when an individual refuse to symbolize experiences contrary to the self concept. ये तो कभी भी होबन रिफ्यूज कथा कहि देला contrary कथा कहउची symbolic experience of self concept बा संगरे. when an individual is congruent with their ideal self. Individual is congruent with their ideal self. Individual टा congruent ideal self ने self image ideal self सहित congruent हेतिले कथा अलगा ही थाता. when an individual see themselves as they actually are, that is called real self. मु कोन जेतेबेले एक्चुअली मु बुझी परिबी दैट इज कॉल्ड रियल सेल्फ. बट कॉन्ग्रुएंसी रे तीटा कथा रहउतला सेल्फ इमेज आ गुटे रहउतला तमरो आइडियल सेल्फ भितरे रिलेशन टा बा क्लोजनेस टा. सेटा कोन देखिबा ना व्हेन एन इंडिविजुअल इज ओपन टू ऑल एक्सपीरियंस एंड कैन इनकॉर्पोरेट देम इनटू देयर सेल्फ कांसेप्ट. तार सब एक्सपीरियंस को जेतेबेले तार सेल्फ कांसेप्ट सहित से रिलेट करिवो क्लोजली सेही सेतेबेले कोन होबो ना सेटा को हम कहबा na congruence. So right answer is option D. Then the last question, what is the result of incongruence in Carl Roger? Incongruence Carl Roger को हिसाब रे incongruence theory माने incongruence कोन ना indifference and apathy, excitement and motivation, confusion and uncertainty, tension and anxiety.
इनकंग्रुएंसी कथा कहूँ ओके तो ऑप्शन हम डी टेंशन एंड एंजाइटी सीटी आम इनकंग्रुएंसी देखिपर देखा जिते फुलफिल हो तुम सेल्फ इमेज आ आइडियल इमेज भितर किसी रिलेसन रहू न तुम गोटे आइडियलिस्टिक प्रस्पेक्ट गोटे नहीं किंतु एक्सपीरियंस गोटे उल्टा हो देन ऑटोमेटिकली टेंशन और एंजाइटी आसो तो से इनकंग्रुएंसी होबार पॉसिबिलिटी अच्छी ओके थैंक्स टू ऑल फॉर दिस क्लास तो आम नेक्स्ट आउ नुआ नुआ वीडियो आनिबा तो से आम आउ जो साइकोलॉजिकल पार्ट रे विभिन्न कथा अच्छी ताकू विथ क्वेश्चन डिस्कशन करिया तो नेक्स्ट रे हमरो मोर ऑलरेडी जो पियाजे आउ भाइगोस्की थियोरी डिटेल डिस्कशन अच्छी मु से नेक्स्ट रे मु कौन करी ना से दुटा कॉन्सेप्ट रिलेटेड किसी एमसीक्यू डिस्कशन करदबा ओके थैंक्स